हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्मूथनिंग कैसे होती है। आज आपको सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा दूंगा आज मैं। तो सबसे पहले स्मूथनिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेड वॉश करना है अच्छे से। हेड वॉश करने के बाद आपको सारे बाल को अपने अच्छे से ड्राई कर लेना है और ड्राई कर लेने के बाद आपको 4 सेक्शन निकालने हैं, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से आपको सेक्शन निकालने हैं और वाटर स्प्रे कर करके आपको जो है एप्लीकेशन करनी है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। और स्मूथनिंग करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है अपनी स्मूथनिंग क्रीम, और अच्छे से इमल्सीफाई करनी है। इतनी अच्छे से इमल्सीफाई करनी है कि हमारे एक भी बाल छूटे ना। और हमें क्या ध्यान रखना है, अच्छे से हमें कॉम्ब करनी है बालों में। जैसे ही हम क्रीम लगाएंगे उसके बाद में हमें अच्छे से कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद जो है हमें सीधे रख देने हैं अपने बाल, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से आप सेक्शन वाइज सेक्शन काम करना और आप छोटे छोटे सेक्शन लेना। बिल्कुल एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है और आपके सेक्शन जो है बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इससे क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन हम करते हैं उससे क्या है, अगर हमारे नीट एंड क्लीन सेक्शन होंगे तो उससे क्या है, हमारी जो है बहुत अच्छी स्मूथनिंग क्रीम का रिज़ल्ट आता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इमल्सीफाई कर रहा हूँ अच्छे से। इस तरीके से आपको इमल्सीफाई करना है। और गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आज आप स्मूथनिंग करनी पूरी सीख जाओगे और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे एक बार में ही स्मूथनिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताना किस टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. To see the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जब हमारी ये एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी स्मूथनिंग की, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें वॉशिंग चेयर पे ले जाके बॉन्ड ब्रेक चेक करना है। बॉन्ड ब्रेक आप कैसे चेक करोगे अपने, जब हमारा बाल जो है खींचने लगता है रबड़ की तरह, तो हम समझ लेना कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया है। फिर उसको हम गर्म पानी से वॉश करेंगे। हल्का गर्म पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फिर हम वॉश करने के बाद क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रायर करने के बाद हमें करनी है आयनिंग। जब हमारी 100% ड्राई हो जाएगी बाल,
और ड्रायर भी हमें नॉर्मल हीट पे चलानी है, ज़्यादा हीट पे नहीं चलानी है। और हमें अच्छे से वॉश करना है बालों को। और वॉश हम कैसे करेंगे, वॉश हम मास्क भी लगा सकते हैं और बिना मास्क के भी हम वॉश कर सकते हैं। तो मैं बिना मास्क के वॉश कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे गाइस, जब हमारी जो है वॉश करेंगे बालों को, तो हमें क्या है अच्छे से इमल्सीफाई करना है कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद हम इमल्सीफाई अच्छे से करने के बाद हमें वॉश करना है बालों को। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इमल्सीफाई कर रहा था। और उसके बाद में हम वॉश करेंगे अपने बालों को। उसके बाद में जो है हम क्लाइंट को लेके आके चेयर पे हम अच्छे से ड्रायर करेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से हम ड्रायर कर रहे हैं। ड्रायर करने के बाद हमें अच्छे से सेक्शन निकाल लेने हैं 4, और 4 सेक्शन निकालने के बाद हम करेंगे आयनिंग। आयनिंग हम कैसे करेंगे, अगर किसी के बाल हल्के हैं तो हम जो है 190 हीट पे चलाएंगे अपने बालों को, वरना हम फुल हीट पे चलाएंगे 220 पे। आप देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था गाइज, तो इस वजह से हम आपको मोटे मोटे सेक्शन लेके दिखा रहे हैं। पर आप सेक्शन वाइज काम करना, छोटे छोटे सेक्शन लेके आप काम करोगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आयनिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको आयनिंग कर लेनी है बालों में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जब हमारी आयनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज़र लगाना है, जो 2 नंबर होता है क्रीम का, स्मूथनिंग क्रीम वाला। और अच्छे से हमें रूट्स पे भी लगा सकते हैं हम उसको, तो हम अच्छे से लगाएंगे इमल्सीफाई करके। अच्छे से आपको एप्लीकेशन करनी है। और ये जो न्यूट्रलाइज़र होता है ये हमारे बालों को हीट देता है नेचुरली। तो हमें क्या है, उससे हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमारे बालों को। बिल्कुल भी हमारा क्लाइंट जो है हिलना नहीं चाहिए। अच्छे से आप इमल्सीफाई करो और एप्लीकेशन अच्छे से करनी है आपको इसकी न्यूट्रलाइज़र की। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें न्यूट्रलाइज़र लगा के 10 मिनट से 15 मिनट रखना है। बालों के अकॉर्डिंग किसके बाल कैसे हैं, तो आप 10 से 15 मिनट लगा के रख सकते हो। बहुत है ये 10 से 15 मिनट। और 15 मिनट लगाने के बाद जब हमारे बालों में सारे में न्यूट्रलाइज़र लग जाएगा, उसके बाद में हम नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll... तो
गाइज़ हमारा जो है न्यूट्रलाइज़र भी लग चुका है। अब हम इसको स्टेट में रख के 10 मिनट के बाद वॉश करेंगे। अब आप देख सकते हो किस तरीके से हम वॉश कर रहे हैं। अच्छे से हमें इसको भी इमल्सीफाई करना है। इमल्सीफाई करने के बाद हमें अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद बालों को ड्राई कर देना है। उसके बाद हमारी स्मूथिंग कंप्लीट हो गई है। तो गाइज़ आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो आफ्टर वॉश के बाद।